Okay. Rationalize the denominator is actually changing denominator to a rational number. Okay. When I have to rationalize the denominator 1 by root 2 and this is the question actually. Okay. So I have to convert denominator is root 2. I have to convert root 2 to a rational number. So what I'll do, I'll multiply by root 2 in numerator and denominator. Okay. Root 2 into root 2 is 2 and this is root 2. So this is the answer. Now I got a denominator as a rational number. Is it मैम 1 रूट 2 होना चाहिए ना? किया कहाँ पर? मैम ये ऊपर 1 रूट 2 होना 1 रूट 2 1 होना रूट चाहिए 2 ना? एक्चुअली 1 रूट 2 का मतलब यही है, खाली रूट 2 इज 1 रूट 2 ओनली. ओके, जैसे हम x लिखते हैं 1x नहीं लिखते हैं, वैसे ही how do we write x? We write x only this way. What does it mean? Coefficient of x is 1. Okay, similarly we write root 2 only, we do not write 1 root 2. It's same, it's understood. Okay, then example 18, rationalize the denominator 1 by 2 plus root 3. Okay, whenever we have this form, okay, will multiply by मैम ये माइनस हो जाएगा. 2 minus root 3 in numerator and denominator. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 minus root 3 मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into any number is number itself. अब डिनोमिनेटर में किस फॉर्म का हो गया ये एक्सप्रेशन? x plus y, x minus y. So it is x square minus y square. Okay, so it is 2 minus root 3. 2 square is 4, root 3 square is 3. So it is 2 minus root 3. This is the answer. Is it clear? Yes मैम. Yes. Okay, next question. मैम 4 minus 3 1 नीचे नहीं लिखेंगे? What? मैम 4 नीचे minus 4 3 का मतलब 1 है, तो किसी भी नंबर का जिसका हम कोई भी डिनोमिनेटर नहीं लिखते हैं, एक्चुअली उसका डिनोमिनेटर 1 ही है. जैसे हम खाली 5 लिखते हैं तो 5 का बाय डिफॉल्ट डिनोमिनेटर 1 ही है, तो वी डोंट राइट इट. ऐसे ही 4 minus 3 is 1, so we don't have to write it. Okay. Okay. Yes ma'am. Then example 19. Rationalize the denominator 5 by root 3 minus root 5. Yes, Manav, what I'll multiply in numerator and denominator? Unmute and say. We will multiply root 3 plus root 5. Okay. Root 3 plus root 5. Okay. Now it will be 5 into root 3 plus root 5. And Yashvi, what will be the denominator? Root 3 minus root 5, root 3 plus root 5. What will be the denominator? And 3 plus 5. 3 minus 5 या 3 plus 5? मैम प्लस. Y plus. ऐसा होता है x minus y, x plus y. It is x square minus y square. Okay, so it will be minus. Okay, 5 into root 3 plus root 5, and it will be 3 minus 5, that is equal to minus 2. So it is equal to minus of 5 by 2 root 3 plus root 5. This is the answer. Is it clear? Ma'am. Yes ma'am. Okay. Next question. Example 20. Rationalize the denominator. 1 by 7 plus 3 root 2. Yes, Yashvi. What should I multiply in numerator and denominator? Ma'am 7 minus 3 root 3 denominator and numerator both. 7 minus 3 root 2. Yes ma'am. Okay. Yes, Manav. What will be the denominator? If I multiply 7 plus 3 root 2, 7 minus 3 root 2. What will be the Ma'am, denominator? Ma'am, 7 minus 3 root 2 whole square.
7 square minus 3 root 2 the whole square. x plus y x minus y होता है x square minus y square. x क्या है 7, y क्या है 3 root 2. अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे. 7 square is 49. 3 root 2 का स्क्वायर मीन्स 9 2 जा 18. 3 root 2 into 3 root 2 ये क्या होगा 3 into 3 9 root 2 into root 2 2 9 2 जा 18. Okay, 49 minus 18 that is 31 and 7 minus 3 root 2. Okay, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is actually rationalize हो रहा है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं हम. डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया है ये सब प्रोसीजर करने से. पहले वाली स्लाइड्स में भी if we see in previous questions after doing this process denominator has been converted to a rational number. Okay, like here denominator is 1, that is also a rational number. Okay, now coming to exercise 1.5. Question 1, classify the following numbers as rational and irrational. First is 2 minus root 5. Is it rational or irrational? Ma'am, irrational. Irrational क्यों होगा? Because root 5 is big. देखो रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236 डॉट डॉट डॉट. तो 2 माइनस 2.236 that will be minus of 1.236 dot dot dot. It will neither be terminating nor be repeating, so it is Ma'am, by irrational. 1 ma'am 0 it will. Sorry, 0, right. ठीक है. So it is irrational. Second one, 3 plus under root 23 minus under root 23. So when we'll open the bracket, okay, under root 23 and under root 23 will get cancelled. So it is 3. 3 is a 3. rational Ma'am, number. rational. Okay. Then third one, 2 root 7 upon 7 root 7. Root 7 and root 7 will get cancelled. 2 upon 7 is a rational number. Okay. Fourth one, 1 by root 2. Okay. So 1 by root 2 will be, we can multiply by root 2 in numerator and denominator. This is root 2 by 2. Ma'am, irrational. Root 2 by 2. Rational. 1 minute. Root 2 की वैल्यू होती है, who is saying rational? 1.414 dot 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 upon 2. तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे still it will be 0.707 dot dot dot. It is irrational only. Okay. Yes, तो एक्चुअली एक रैशनल नंबर है और दूसरा इररेशनल नंबर है, तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशिएंट विल ऑलवेज बी इररेशनल. जैसे यहाँ पे एक रैशनल है एक इररेशनल है, तो रिजल्ट इररेशनल होगा. ठीक है. यहाँ पे भी एक रैशनल है एक इररेशनल है, तो इसका रिजल्ट इररेशनल होगा. लेकिन अगर दोनों इररेशनल है, जैसे यहाँ पे ये वाला नंबर इररेशनल है ये भी इररेशनल है, तो रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है. ओके. yes. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 2 pi. 2 pi is actually irrational because pi की वैल्यू है 3.1415 dot dot dot. So 2 pi will be 2 into 3.1415 dot 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 dot. So this will be actually the number will be a non-terminating non-repeating type, so it is irrational only. Okay. 3.1415 into 2, that is equal to 6.283 dot dot dot. So it is irrational. Okay.
Next, is it clear? Yes, ma'am. Next, question 2. Simplify the following expression. First one, 3 plus root 3, 2 plus root 2. This we have to simplify. Okay. So, कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये जब ऐसा हमको मल्टीप्लाई करना होता है a प्लस b Distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? ओके, प्लस c प्लस d, तो ये होता है a इंटू सी प्लस डी प्लस b इंटू सी प्लस डी. ओके, सो इट इज 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2. इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्या किया हमने? 3 को Multiply किया. यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, रूट 3 लिखा, फिर से इससे मल्टीप्लाई किया. दिस इज 3 इंटू 2 इज 6, 3 इंटू रूट 2 इज 3 रूट 2, 2 इंटू रूट 3 इज 2 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होगा? 6. रूट 6. Root. Now we cannot further solve this. None of them are like terms. ये कांस्टेंट है, इसमें रूट 2 है, इसमें रूट 3 है और इसमें रूट 6 है. इनको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते. दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट इज 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3. ओके, दिस इज ऑफ फॉर्म x प्लस वाई, x माइनस वाई. ठीक है, जब ये एक जैसे होंगे, मतलब इसको अगर हम x लिखें यहाँ पे भी वही नंबर है, यहाँ पे इसको अगर हम y लिखें यहाँ पे भी यही नंबर है. इट इज ऑफ फॉर्म x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस वी कैन राइट डायरेक्टली 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 द होल स्क्वायर. 3 square is 9, root 3 square is 3, 3 minus 6, 9 minus 3 is 6. Okay. Yes, Third one, if you want to copy it. So root 5 plus root 2 the whole square. If we put this identity a plus b the whole square, a square plus b square plus 2ab. Okay. A is ma'am, what? 7 Root 5. B is what? Root 2. 2 into root 5 into root 2. Root 5 is square is 5, root 2 square is 2, and 2 root 10. That is equal to 7 plus 2 root 10. This is the answer. Ma'am, Yes. ma'am, next one I will do. Okay, you want to try? ठीक है. Yes. हाँ करो. Question 4th. Root 5 minus root 2. Root 5 plus root 2. Ma'am, 3 is the answer. Yes, ma'am. Okay. ये है root 5 square minus root 2 square. Root 5 is 5. Root 2 square is 2. 5 minus 2 is 3. 10. Okay. Next, question 3. Recall pi is defined as ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Okay, so actually answer you will write this way. When you measure a length with a scale, you get an approximate rational value. So you may not realize whether C or D is irrational. Actually pi हमने क्या देखा? Circumference क्या होता है? Pi into D. Circumference का फॉर्मूला ये होता है C equals to 2 pi r. और अगर 2r लिखे तो हम pi into D भी लिख सकते हैं. ये तो पता है? Circumference of a circle क्या होता है? किसी सर्कल की बाउंड्री की लेंथ. ठीक है. अब circumference of circle is given by either this formula 2 pi r या 2r को d लिख दे तो ये होता है pi d. ठीक है. तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है pi equals to c upon d. ठीक है. तो c upon d है तो फिर pi रैशनल नंबर होना चाहिए.
क्वेश्चन ये है। लेकिन पाई इररेशनल इसलिए है क्योंकि हमने जो डी निकाला डायामीटर वो तो हमने स्केल से निकाला। ओके, एंड विथ स्केल वी डोंट नो एक्चुअली, वी इवन डोंट रियलाइज कि ये डी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है कि एक्यूरेट वैल्यू है। तो it is, there is no contradiction. We can write this answer this way. There, Google Meet. You both have turned off your videos? Oh, Okay. So turn it on only, keep it on. There is, you will write answer this way. There is no contradiction. Okay. When we measure length with scale, we get an approximate value. Then what is the meaning of contradiction? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है कि कोई चीज को गलत प्रूव करना। मतलब कि अगर हम पाई को सी अपॉन डी बोलते हैं, मतलब ये तो दो नंबर्स का रेशो है, ठीक है, तो ये अगर दैट मींस पाई शुड बी ए रैशनल नंबर, ठीक है, लेकिन पाई को हमने फिर बाद में बोला कि पाई इज एग्जांपल ऑफ इररेशनल नंबर। तो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब कि एक स्टेटमेंट को दूसरे कोई ऐसा प्रूफ देना जिससे वो फॉल्स प्रूव हो जाए, ठीक है। Yes, ma'am. So we get an approximate rational value. So we may not realize that C or D is irrational. Okay. There is no contradiction. When we measure length with scale, we get an approximate rational value. So we may not realize that C or D is irrational. Okay. Next. Question number 5. Completed this one. Can I move ahead? yes, Ma'am, ma'am. 1 minute. Okay. Ma'am, fourth is number. Rationalize the denominator. Okay. First is 1 by root 7. Yes, what is the answer? Yashvi? Ma'am, Ma'am, root 7. root 7 Ma'am, root upon 7 7. upon 7. So, okay, you will multiply by root 7 in numerator and denominator. So, you will get root 7 upon 7. This is the answer. Second one. Yes, Ma'am, Manav, what is root the 7 answer? plus root 6. Ma'am, 1 second. Okay. Sorry. Ma'am, root 7 plus root 6. Yes, root 7 plus root 6. So, multiplying by root 7 plus root 6 in numerator and denominator. And x Yes. minus y, x plus y. This is x square minus y square. So it is root 7 plus root 6. Then 1 by root 5 plus root 2. Ma'am, root 5 plus 2 upon. Ma'am, root 5 minus 2 upon 2. Ma'am, 3 upon 3. Yes. Upon root 5 square minus root 2 square. So it will be root 5 minus root 2 upon 3. Then fourth one. 1 upon root 7 minus 2. Okay. So it is root 7 minus 2 upon multiplying by root 7 plus 2. Ma'am, root 7 plus 2 upon 11. Check whether it is 11 or not. Oh, ma'am, sorry. Ma'am, 2. So it is Ma'am, 7 minus 4. Ma'am, upon So 3. it will be 3. Yes, ma'am. Okay, this will be the answer. So, any doubt till here? No, ma'am. No? No.
part 1, root 3 plus root 2 upon root 3 minus root 2. Okay. Then 1 upon 5 plus 3 root 2. 3 minus 2 root 2 upon 3 plus 2 root 2. Okay. So these three questions are homework. You can find the answers. Okay. And this we will discuss in